still true. Adjacency list, and let's try to reduce the cost for the second operation. And this structure array, and this array, as you can see, is a different arrangement from our previous array. In our earlier arrangement, in here, index does not represent anything, and the values are the actual indices of the nodes to which we are connected. Now, instead of using an array here to store this set of integers, we can also use a linked list. And why just array or linked list? I would argue that we can also use a tree here. In fact, a binary search tree is a good way to store a set of values. There are ways to keep a binary search tree balanced, and if you always keep a binary search tree balanced, you can perform search in search array or linked list. I would argue that we can also use a tree here. In fact, a binary search tree is a good way to store a set of values. There are ways to keep a binary search tree balanced, and if you always keep a binary search tree balanced, you can perform search, insertion, and deletion, all three operations, in order of log of number of nodes. We will discuss cost of operations for any of these possible ways in some time. Right now, all I want to say is that there are a bunch of ways in which we can store connections of a node. For our example graph that we started with, instead of an adjacency matrix, we can try to do something like this. We are still storing the same information. We are still saying that 0th node is connected to 1th, 2th, and 3th node. 1th node is connected to 0th, 4th, and 5th node. 2th node is connected to 0th and 6th node, and so on. But we are consuming a lot less memory here. Programmatically, this adjacency matrix here is just a two-dimensional array of size 8 cross 8. So we are consuming 64 units of space in total. But this structure in write does not have all rows of same size. How do you think we can create such a structure programmatically? Well, it depends. In C or C++, if you understand pointers, then we can create an array of pointers of size 8, and each pointer can point to a one-dimensional array of different size. 0th pointer can point to an array of size 3, because 0th node has 3 connections, and we need an array of size 3. 1th pointer can point to 2th pointer, should point to Code School's lesson titled Pointers and Arrays, the link to which you can find in the description of this video. But think about it, the basic idea is that each row can be a one-dimensional array of different size, and you can implement this with whatever tools you have in your favorite programming language. Now let's quickly see what are the pros and cons of this structure in the write in comparison to भैया उस वेक्टर का साइज क्या है, ठीक है। तुमने j को 0 से j लेस देन एडजेसेंट करने वाले के लिए 1 आ गया। ये 0 वर्टेक्स है, हां 0 2 1 3 3 4 2 4 और ये हमारे पास आंसर आ गया कि 0 वर्टेक्स है, हां जी, वहां से एक फर्स्ट और सेकंड वाली जो वर्टेक्स है उसमें एज जा रही है। फर्स्ट वाले से 0 2 और 3 में एज जा रही है। The matrix in the left. We are definitely consuming less memory with the structure in right. With adjacency matrix, our space consumption is proportional to square of number of vertices. While with the second structure, space consumption is proportional to number of edges. And we know that most real-world graphs are sparse. That is, the number of edges is really small in comparison to square of number of vertices. Square of number of vertices is basically total number of possible edges. And for us to reach this number, every node should be connected to every other node. In most graphs, a node is connected to few other nodes and not all other nodes. In this second structure, we are avoiding this typical problem of too much space consumption in an adjacency matrix by only keeping the ones and getting rid of the redundant zeros. Here, for an undirected graph like this one, we would consume exactly 2 into number of edges units of memory. And for a directed graph, we would consume exactly E, that is number of edges units of memory. But all in all, space consumption will be proportional to number of edges. Or in other words, space complexity would be big O of E. So the second structure is definitely better in terms of space consumption. But let's now also try to compare these two structures for time cost of operations. What do you think would be the time cost of finding if two nodes are connected or not? We know that it's constant time or big O of 1 for an adjacency matrix. Because if we know the start and end point, we know the cell in which to look for 0 or 1. But in the second structure, we cannot do this. We will have to scan through a row. So if I ask you something like, can you tell me if there is a connection from node 0 to 7? Then you will have to scan this 0th row. You will have to perform a linear search on this 0th row to find 7. Right now, all the rows in this structure are sorted. You can argue that I can keep all the rows sorted and then I can perform a binary search, which would be a lot less costlier. That's fine, but if you just perform a linear search, then in worst case, we can have exactly V, that is number of vertices, cells in a row. So if we perform a linear search, in worst case, we will take time proportional to number of vertices. And of course, the time cost would be big O of log V if we would perform a binary search.
Logarithmic runtimes are really good, but to get this here, we always need to keep our rows sorted. Keeping an array always sorted is costly in other ways, and I'll come back to it later. For now, let's just say that this would cost us big O of v. Now, what do you think would be the time cost of finding all nodes adjacent to a given node, that is, finding all neighbors of a node? Well, even in case of adjacency matrix, we now have to scan a complete row. So it would be big O of v for the matrix, as well as this second structure here. Because here also, in worst case, we can have v cells in a row, equivalent to having all ones in a row in an adjacent to a given node, that is, finding all neighbors of a node. Well, even in case of adjacency matrix, we now have to scan a complete row. So it would be big O of v for the matrix, as well as this second structure here. Because here also, in worst case, we can have v cells in a row, equivalent to having, for now, let all nodes adjacent to a given node, that is, finding all neighbors of a node. Well, even in case of adjacent, as well as this second structure here. Because here also, in worst case, we can have v cells in a row, equivalent to having all ones in a row in an adjacency matrix. When we try to see the time cost, we can have v cells in a row, equivalent to having all ones in a row in an adjacency matrix. When we try to see the time cost of an operation, we mostly analyze the worst case. So for this operation, we have big O of v for both. So this is the picture that we're getting. Looks like we are saving some space with the second structure, but we're not saving much on time. Well, I would still argue that it's not true. When we analyze time complexity, we mostly analyze it for the worst case. But what if we already know that we are not going to hit the worst case? If we can go back to our previous assumption that we are dealing with a sparse graph, that we are dealing with a graph in which a node would be connected to few other nodes and not all other nodes, then the second structure will definitely save us time. Things would look better once again if we would analyze them in context of a social network. I'll set some assumptions. Let's say we have a billion users in our social network, and the maximum number of friends that anybody has is 10,000. And let's also assume computational power of our machine. Let's say our machine or system can scan or read 10 to the power 6 cells in a second. And this is a reasonable assumption because machines often execute a couple of millions instructions per second. Now, what would be the actual cost of finding all nodes adjacent to a given node in adjacency matrix? Well, we will have to scan a complete row in the matrix. That would be 10 to the power 9 cells. Because in a matrix, we would always have cells equal to number of vertices. And if we would divide this by a million, we would get the time in seconds. To scan a row of 10 to the power 9 cells, we would take 1,000 seconds, which is also 16.66 minutes. This is unreasonably high. But with the second structure, maximum number of cells in a row would be 10,000, because the number of cells would exactly be equal to number of connections. And this is the maximum number of friends or connections a person in the network has. So here, we would take 10 to the power 4 upon 10 to the power 6, that is 10 to the power minus 2 seconds. 10 6. To scan a row of 10 to the power 9 cells, we would take 1,000 seconds, which is also 16.66 minutes. This is unreasonably high. But with the second structure, maximum number of cells in a row would be 10,000, because the number of cells would exactly be equal to number of connections. And this is the maximum number of friends or connections a person in the network has. So here we would take 10 to the power 4 upon 10 to the power 6, that is 10 to the power minus 2 seconds, which is equal to 10 milliseconds. 10 milliseconds is not unreasonable. Now let's try to deduce the cost for the second operation, finding if two nodes are connected or not. In case of adjacency matrix, we would know exactly what cell to read. We would know the memory location of that specific cell, and reading that one cell would cost us 1 upon 10 to the power 6 seconds, which is 1 microsecond. In the second structure, we would not know the exact cell. We will have to scan a row. So once again, maximum time taken would be 10 milliseconds, just like finding adjacent nodes. So now, given this analysis, if you would have to design a social network, what structure would you choose? No brainer, isn't it? Machine cannot make a user wait for 16 minutes. Would you ever use such a system? Milliseconds is fine, but minutes, it's just too much.
So now we know that for most real-world graphs, this second structure is better because it saves us space as well as time. Remember, I'm saying most and not all, because for this logic to be true, for my reasoning to be valid, graph has to be sparse. Number of edges has to be significantly lesser than square of number of vertices. So now, having analyzed space consumption and time cost of at least two most frequently performed operations, looks like this second structure would be better for most graphs. Well, there can be a bunch of operations in a graph, and we should account for all kind of operations. So before making up my mind, I would analyze cost of few more operations. What if after storing this example graph in computer's memory in any of these structures, we decide to add a new edge? Let's say we got a new connection in the graph from A to G. Then how do you think we can store this new information, this new edge, in both these structures? The idea here is to assess that once the structures are created in computer's memory, how would we do if the graph changes? How would we do if a node or edge is inserted or deleted? If a new edge is inserted in case of an adjacency matrix, we just need to go to a specific cell and flip the 0 at that cell to 1. In this case, we would go to 0th row and 6th column and overwrite it with value 1. And if it was a deletion, then we would go to a specific cell and make the 1 0. Now, how about this second structure? How would you do it here? We need to add a 6 in the first row. And if you have followed this series on data structures, then you know that it's not possible to dynamically increase size of an existing array. This would not be so straightforward. We will have to create a new array of size 4 for the 0th row. Then we will have to copy content of the old array, write the new value, and then wipe off the old one from the memory. It's tricky implementing a dynamic or changing list using arrays. This creation of new array and copying of old data is costly. And this is the precise reason why we often use another data structure to store dynamic or changing lists. And this another data structure is linked list. So why not use a linked list? Why can't each row be a linked list? Something like this. Logically, we still have a list here, but concrete implementation wise, we are no more using an array that we need to change dynamically. We are using a linked list. It's a lot easier to do insertions and deletions in a linked list.
सेकंड वाले से 104 में जा रही है, थर्ड वाले से 14 में जा रही है और फोर्थ वाले से 3 और 2 में मेरी जा रही है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, ठीक। हाँ जी, अब अगर मैं इसे बोलूं कि भैया अगर मुझे इसमें वेट ऐड करना हो, क्या ऐड करना हो, अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ, तो तब क्या होगा सीन, तब तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा। हाँ जी, तो वो चेंज आएगा, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि अब मुझे दो इन्फॉर्मेशन एक साथ स्टोर करनी पड़ेगी, है ना, कि भैया 0 से 1 पे क्या जा रही है, एच जा रही है और उसका वेट कितना है वो भी मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहां पे यूज करने वाला हूं पेयर इंट कॉमा इंट। क्लियर है? हाँ जी। अब मैं अगर पेयर को यूज कर रहा हूं तो यहां पे मैंने एक वेट भी मुझे लेना पड़ेगा, वेट, ताकि मैं वेट को यहां पे डाल पाऊं, इनपुट पे ले पाऊं। और पुशबैक मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पुशबैक करना पड़ेगा कि मेक पेयर, किसका पेयर बनेगा, वी कॉमा वेट का पेयर बनाना पड़ेगा मुझे। पुशबैक क्या करूंगा मैं, ये तो करूंगा वी कॉमा ये एज हो गई, ये उसका वेट हो गया, यू से वी में एज जा रही है, उसका वेट ये रहा, फिर वी से यू में एज जा रही है और उसका वेट बताना पड़ेगा। चलो इसको रिप्लेस करते हैं, यहां पे इसको यू बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन में ज्यादा हमें चेंज करना पड़ा। अब प्रिंट कराते समय हमें कैसे प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट कैसे होंगी ये चीजें बताइए। देखो जब मैं प्रिंट कराने आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे इसको प्रिंट फर्स्ट और सेकंड करके करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू होती है, दूसरी क्या होती है, सेकंड वैल्यू होती है। तो वही मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं कि डॉट फर्स्ट स्पेस इसी को कॉपी करके डॉट सेकंड करना पड़ेगा। मुझे यहां पे इसको प्रिंट फर्स्ट और सेकंड करके करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू होती है, दूसरी क्या होती है, सेकंड वैल्यू होती है। तो वही मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं कि डॉट फर्स्ट स्पेस इसी को कॉपी करके डॉट सेकंड, क्योंकि ये तो मेरी एच को प्रिंट कर देगा और ये उसके वेट को सेकंड। चलिए अब ये बिल्कुल सही चलेगा। इसको हटाते हैं, क्लियर करते हैं और इसको रन करते हैं। तो मैं यहां पे आता हूं 5 और 6, 5 वर्टेक्स हैं, 6 एजेस हैं। 0 1 10 वेट, 0 2 5 वेट, 1 2 9 वेट, 1 3 8 वेट, 3 4 11 वेट और लास्ट 2 4 5 वेट। तो हम यहां पे देख सकते हैं हमारे आंसर को इजीली। अच्छा यहां पे ये आंसर तो चिपक से गए, चलो इन आंसर को पहले सही करते हैं। ये चिपक कैसे गए, इनकी हिम्मत कैसे हुई, चिपक कैसे, ओके। चलिए अब नहीं चिपकेंगे, इसको दोबारा रन किया, यहां पे कॉपी पेस्ट किया और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आया कि 0 से 1 एच जा रही है और वेट 10 है, 0 से 2 एच जा रही है, वेट 5 है, 1 से 0 एच जा रही है, वेट 10 है, 1 से 2 एच जा रही है, वेट 9 है, 1 से 3 एच जा रही है, वेट 8 है। इस तरीके से हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको इसको डायरेक्टेड ग्राफ के लिए सॉल्व करना है, दोनों ही, वेट भी और अनवेट वाली भी। ये आपके होमवर्क है, कर लोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसको सॉल्व करना, है ना। हाँ तो इसको आप होमवर्क में कर लेना कि इसके हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम बेसिक चीजें देख रहे हैं ताकि हमें एक बार अच्छे से समझ आ जाए, तो भैया हम एडवांस लेवल की चीजें आराम से कर देंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब हमने सीख लिया है एडजेंसी लिस्ट के बारे में। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एडजेंसी मैट्रिक्स ज्यादा अच्छा होता है या मेरी एडजेंसी लिस्ट ज्यादा बढ़िया, किसको हमें ज्यादा यूज करना चाहिए। तो चलो इनका हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले किस किसका, एडजेंसी मैट्रिक्स और एडजेंसी लिस्ट, इनको हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में, अलग अलग पैरामीटर में इनको हम तोलेंगे। तो पहला पैरामीटर कि अगर मुझे अपने ग्राफ में एज को ऐड करना हो तो कितना टाइम लगेगा। अगर मैं आपसे बोलूं, मैं कह रहा हूं इस एज को ऐड करना है मुझे, कि 2 से 3 में एक एज चली गई, तो मुझे क्या करना है, 2 से 3 पे जाओ 1 बना दो, 3 से 2 पे जाओ 1 बना दो, कितना टाइम लगा, कांस्टेंट टाइम। और अगर मैं वही बात लिस्ट के लिए बोलूं, एडजेंसी लिस्ट में कितना टाइम लगेगा कि 2 से 3 एज डालनी है, क्या बोलूंगा भाई 2 वाले पे 3 पुट बैक कर दो, 3 वाले पे 2 को पुट बैक कर दो, कांस्टेंट टाइम हो गया दोनों में, हुआ नहीं हुआ। हां जी, तो दोनों में वो काम किसमें हो गया, कांस्टेंट टाइम में कंप्लीट हो गया, कोई इतना अच्छा खासा टाइम हमें नहीं लगा। चलो अब सेकंड, अगर मैं बोलूं यहां पे मुझे रिमूव करना है एच को, क्या आंसर गेस कर सकते हो, एक एच को डिलीट करना है, कितना टाइम लगेगा। इसका होगा ऑर्डर ऑफ बी टाइम। देखो मैं बोल रहा हूं इस 2 3 वाली एच को रिमूव कर दो, ठीक है ना, 2 टाइम लगेगा। इसका होगा ऑर्डर ऑफ बी टाइम। देखो मैं बोल रहा हूं इस 2 3 वाली एच को रिमूव कर दो, ठीक है ना, 2 से 3 पे जाओ, इसको 0 बना दो, 3 से 2 पे जाओ 0 बना दो, कौन सा टाइम में काम हो गया। अब वहीं अगर मैं लिस्ट की बात करूं, मैं कह रहा हूं 0 से 2 वाले को डिलीट मार, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं 2 पे जाऊंगा, 0 वाले को मुझे डिलीट करना पड़ेगा ना। हां तो ये मेरे पास वेक्टर आ 0 4 1 3, तो सबसे पहले मैं 0 करूंगा, 0 तो मुझे पहले मिल गया, तो इस 0 को डायरेक्ट डिलीट मारूंगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर है, एरे है, ठीक है। तो उसके बाद मुझे पहले 4 1 3 को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और इसका स्पेस कुछ ऐसे लिखेगा इसके बाद, है ना, कि भैया इन सबको आगे एक स्पेस शिफ्ट करो, लास्ट पे पॉप आउट कर लो। तो इसमें कितना टाइम लगेगा मुझे, ऑर्डर ऑफ बी टाइम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी टाइम लगा। मैंने कहा वर्स्ट केस में आपके यहाँ पे कितने नोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने वर्टेक्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि इस 2 से हर एक उसमें हर एक वर्टेक्स में एक एज जा सकती है, तो कितने वर्टेक्स प्रेजेंट होंगे इसको छोड़ के v-1, तो v-1 वर्टेक्स में एज जा सकती है, ठीक। हां जी, तो आपको v-1 शिफ्टिंग करनी पड़ सकती है, तो मैं बोल दूंगा उसको ऑर्डर ऑफ v। क्लियर। हां जी, अगर मुझे ढूंढना है कि क्या कोई एज एग्जिस्ट करती है, मुझे सिर्फ ये ढूंढना है कि क्या एज एग्जिस्ट करती है, मैं आपको बोल रहा हूं मुझे चेक करना है कि 1 से 2 में एज एग्जिस्ट करती है, तो आप सीधा यहां पे देखोगे 1 से 2 में वैल्यू एग्जिस्ट होगी तो कर रही है, नहीं होगी तो नहीं कर रही है। तो ये काम तो मुझे कांस्टेंट टाइम में पता चल गया, और इसमें वही काम ऑर्डर ऑफ बी टाइम में, क्यों, क्योंकि मुझे जाके इंडिविजुअली जाके चेक करना पड़ेगा कि मैं 1 से 2 पे चेक करूंगा, 1 पे गया 2 के लिए देगा 2 नहीं है नहीं है नहीं है, लास्ट में जाके मिला, और वर्स्ट केस में बी हो सकती है, तो इसलिए मैंने ऑर्डर ऑफ बी लिख दिया। क्लियर। हां जी, अब आपको लग रहा है भैया एडजेंसी मैट्रिक्स सबसे बेस्ट है, लिस्ट ऐसी है, इसको यूज मत करो भाई, हम इसी को यूज करते हैं, इसी को हम यूज करते हैं ज्यादा, क्यों, अभी इसका रीजन आपको बताएंगे। अगर बेस्ट है लिस्ट ऐसी है, इसको यूज मत करो भाई, हम इसी को यूज करते हैं, इसी को हम यूज करते हैं ज्यादा, क्यों, अभी इसका रीजन आपको बताएंगे। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर, और इसकी कितनी होती है, v प्लस ई, होती नहीं होती। हां जी, और वर्स्ट केस में ये कहां तक पहुंच जाता है, v स्क्वायर तक, क्यों, जब इसमें नंबर ऑफ एजेस बहुत ज्यादा होती हैं, एजेस ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके बराबर, कंप्लीट ग्राफ के एज के बराबर। हमने देखा था ना कि अगर आपके एजेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये किसके बराबर बन जाता है, v स्क्वायर के बराबर बन जाता था। तो भैया अगर ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके कंप्लीट जो हमारा ग्राफ होता है उसके एज के बराबर है, उस केस में हमारा ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकलता था। अब मैंने ये स्टेटमेंट की बोली कि आने वाली जो हम प्रॉब्लम करेंगे उसमें एडजेंसी लिस्ट को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू एडजेंसी मैट्रिक्स। देखो इसका कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है, इसके भी केसेस है। अगर आपके पास ग्राफ डेंस है, डेंस ग्राफ है, तो आप इसको प्रेफर करोगे, और अगर आपके पास स्पार्स ग्राफ है तो आप
एडजेंसी लिस्ट को प्रेफर करोगे। ये डेंस ग्राफ और स्पार्स ग्राफ क्या है? डेंस ग्राफ वो ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ एजेस बहुत ही हाई है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके बराबर है, जो आपके कंप्लीट ग्राफ में होती है उससे ज्यादा एजेस है। और स्पार्स उसका उल्टा कि उसमें नंबर ऑफ एजेस काफी कम है। ठीक है, हाँ जी, तो उसको हम क्या करेंगे, स्पार्स ग्राफ, इसमें जो नंबर ऑफ एजेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो स्पार्स ग्राफ अगर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एजेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, मतलब इस कंप्लीट ग्राफ की अगर बगल भी नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं उस केस में इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ v + e के इक्वल आएगी। तो इसलिए स्पार्स ग्राफ इसको प्रेफर करता है। और डेंस ग्राफ का केस होगा तो मैं इसको प्रेफर करूंगा। भैया अभी भी ना रीजनिंग उतनी समझ आई नहीं। चलो अगर स्पार्स ग्राफ है, चलो मैंने मान लिया आप स्पार्स ग्राफ के लिए एडजेंसी लिस्ट प्रेफर कर रहे हो, लेकिन इन केस का क्या होगा, इन केस का क्या होगा, इसमें ये तो हार रहा है, ये तो हार रहा है, ये तो हार रहा है, तो फिर आप स्पार्स ग्राफ के केस में इस एडजेंसी लिस्ट को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो? अभी आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए फेसबुक है, 1 बिलियन लोग होंगे, कम से कम 1 बिलियन यूजर है फेसबुक के पास। हाँ, ये यूजर है, 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 बहुत सारे ऐसे होंगे। ये यूजर इसका फ्रेंड है, 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 ये यूजर इसका फ्रेंड है। अब आप खुद बोलो यहां पे जो ग्राफ प्रेजेंट होगा ये किस टाइप का ग्राफ होगा? मैं बोल सकता हूं जो ये फेसबुक वाला होगा ये स्पार्स ग्राफ टाइप का होगा, बोल सकता हूं। क्यों भैया? देखो अगर मैं हूं तो मेरे ज्यादा से ज्यादा कितने फ्रेंड होंगे? 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 तक ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं हूं मेरे 1 बिलियन फ्रेंड है, हर कोई मेरा फ्रेंड है, ऐसा तो नहीं फेसबुक में। ये एड्रेस को दिखा रही है कि हम दोनों फ्रेंड है फेसबुक में, हम दोनों फ्रेंड है फेसबुक में। ठीक, हाँ, तो अगर मैं सबका फ्रेंड नहीं हूं, मैं इतना कम का फ्रेंड हूं 4-5 हजार लोगों के पास, तो मेरी जो नंबर ऑफ एजेस होंगी वो काफी कम होंगी, नहीं होंगी, नंबर ऑफ एजेस काफी कम होंगी। हाँ जी, अगर नंबर ऑफ एजेस कम होंगी तो मैं किसको प्रेफर करता हूं? स्पार्स ग्राफ को। डेंस ग्राफ को क्यों नहीं करता? देखो अगर डेंस ग्राफ को अगर मैं फॉलो करने लग गया ना तो भैया मुझे पता है ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर मेरी क्या लगती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। और आप खुद कैलकुलेट कर लो, अगर मैं 1 बिलियन into 1 बिलियन कर लूं तो इतना ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ जाएगी दोस्त, इतनी ज्यादा स्पेस की। अब मेरा खर्चा इतना आ जाएगा ना तो मैं पहले वही ये वही काम v + e टाइम में कर देगा। ठीक, हाँ जी, 1 बिलियन हो गया, जितना ये एजेस होंगी क्योंकि काफी कम है। तो इस केस में हम किसको प्रेफर करें? मुझे ये तो पता चल गया कि भैया स्पार्स ग्राफ है, और स्पार्स ग्राफ में हम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? एडजेंसी लिस्ट को। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भैया ये इसकी वजह से, क्योंकि स्पेस काफी कम यूज करता है। लेकिन अगर आपके पास डेंस ग्राफ है तो आप आंख बंद करके इसको यूज कर लो, एडजेंसी मैट्रिक्स को। लेकिन अगर आपके पास जो ग्राफ है स्पार्स है उसमें नंबर ऑफ एजेस काफी कम है। तो भैया मुझे वहां पे स्पेस को बताना होता है। ठीक है, और स्पेस बचा के हम इसको प्रेफर करते हैं। आप खुद सोचो, उसके बाद इसको इसका मतलब नहीं है कि उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। तो स्पार्स के लिए ये लॉजिक समझ आ गया, स्पार्स के लिए हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, और डेंस के लिए ये इसको क्यों यूज कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हुआ। हाँ जी, यहाँ तक तो क्लियर है। हाँ, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी ऐसी है एसक्यूएल वगैरह जो जब इंट्रोड्यूस होंगी तो वो इसको भी ऑर्डर ऑफ वन तक ले आएंगी ऑलमोस्ट। इसलिए हम जो आगे वीडियो में क्वेश्चन करेंगे उसमें हम एडजेंसी लिस्ट को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। जो आने वाले क्वेश्चन होंगे मैं लेक्चर में हर जगह होगा, एडजेंसी लिस्ट का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया अगर मैं एसक्यूएल वगैरह अगर मैं मैथ वगैरह यूज करूं, अनऑर्डर्ड मैथ वगैरह का, तो यही काम मैं ऑर्डर ऑफ वन टाइम तक खींच के ला सकता हूं। जी हाँ, ऑन एवरेज में ऑर्डर ऑफ वन टाइम में ये सारा काम कंप्लीट करा दूं। वो कैसे होगा अभी उसके लिए थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। पहले हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, जो कल हमने नई बात करी जिसके बारे में ट्री वर्सेस ग्राफ। कि ट्री और ग्राफ में डिफरेंस क्या है भैया? देखो पहला कि जो मेरा ये ट्री होता है आपने देखा होगा नोड इसमें भी प्रेजेंट है और वर्टेक्स इसमें भी प्रेजेंट है और ये एजेस इसमें भी प्रेजेंट है। ग्राफ में भी सेम कहानी होती है। लेकिन क्या आपने गौर किया अगर मेरे पास n नोड होते हैं तो मेरे पास n - 1 एज होंगी एग्जैक्टली ट्री के केस में। ग्राफ के साथ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। मैंने कहा अगर आपके पास n नोड होंगे तो n - 1 एजेस ही होती हैं। आप कोई भी ट्री बना के देख लो, ग्राफ में वो बाउंडेशन बिल्कुल नहीं है। सेकंड चीज, इसमें लूप नहीं होता है। ट्री में आप कभी भी लूप नहीं देखोगे, कभी भी नहीं देखोगे, और यहाँ ग्राफ में लूप भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? मैं इसको भी ग्राफ बोल सकता हूँ 0 1 2, ये भी मेरा ग्राफ है, भले इसमें एजेस नहीं है, लेकिन ये ट्री नहीं हो सकता। ये ट्री नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें n - 1 एजेस होंगे, क्योंकि ये हायरार्किकल मॉडल में चीजों को देखता है कि भैया हर एक नोड एक हायरार्की है, और यहाँ ये रूट से शुरू होता है। यहाँ रूट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, यहाँ रूट वगैरह कुछ होता ही नहीं, यहाँ रूट होता है। ठीक है, कि जहां से चीजें स्टार्ट हुई है, जहां से चीजें स्टार्ट हुई, यहाँ रूट वगैरह ऐसा कुछ सीन नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक चाइल्ड होता है, उसका एक ही पेरेंट हो सकता है, एक चाइल्ड है उसका एक ही पेरेंट हो सकता है। यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है, पेरेंट चाइल्ड कितने भी हो सकते हैं किसी के। ठीक, एक ही 2 3 पेरेंट हो गए, एक ही 2 3 चाइल्ड हो गए। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। मैंने कहा एक नोड का सिर्फ एक पेरेंट होता है, यहाँ पे नहीं है। एक नोड का कितने भी पेरेंट हो सकते हैं, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल। ठीक, लेकिन ट्री के केस में वो पॉसिबल नहीं है। ट्री कहता है कि हर नोड का एक ही पेरेंट होगा, सिर्फ रूट नोड छोड़ के, सिर्फ रूट नोड छोड़ के। यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं। आई होप ये क्लियर होगा। अब आप बोलोगे भैया ये इस टाइप की चीजें कहां यूज होती हैं? इस टाइप अगर आप इसको ग्राफ करें तो ये यूज कहां होता है? ये वाला ग्राफ 0 1 2। आपको सोचो जब इनिशियली फेसबुक आया होगा, इंस्टाग्राम आया होगा, लिंक्डइन आया होगा, तो जब कोई यूजर आता है, मान लो आज 10 यूजर आए, तो इनिशियली तो इनमें से कोई कनेक्ट नहीं रहा होगा ना, आपस में कोई दोस्त नहीं रहा होगा, तो उस टाइम पे ये ग्राफ तो ऐसे ही दिखता होगा। तो इसको मैं ग्राफ बोलूंगा ना। मान लो आज आपने फेसबुक स्टार्ट किया, खुद की कंपनी शुरू कर दी, तो वहां पे अभी तुमने 10 यूजर बना दिया, अभी कोई एक दूसरे के साथ फ्रेंड नहीं है, तो एक यूजर 2 यूजर 3 यूजर यूजर कैसे दिखेंगे ना भाई, उनके बीच में ऐसे नहीं, क्योंकि वो अभी क्या नहीं है, फ्रेंड नहीं है। और इसका यूज और भी ज्यादा है कि भाई आप ना इससे वो भी डिटरमाइन कर सकते हो कि भाई आपके पास कोई स्पैम यूजर तो नहीं है जो स्पैम चला रहा है। कि भाई कुछ यूजर होते हैं ना कि हाँ जो अकेले पड़े हुए हैं, ना वो किसी का फ्रेंड है ना वो किसी के साथ कनेक्ट हो रहा है, कुछ आईडी नहीं देखोगे इंस्टाग्राम वगैरह पे। ठीक है, जब कुछ आईडी आती है कि भैया उसके जो इनकमिंग एजेस हैं, ठीक है, मतलब जो उसकी फॉलोइंग है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नंबर फॉलोअर्स बहुत कम। तो ऐसे करके इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन चीजों को पहचान जाते हैं कि भैया ये फेक आईडी हो सकती है। मैंने कहा आपके पास मान लो एक ये है ऐसे करके। ठीक, हाँ जी, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी डिग्री क्या होगी, नोट की 1 2 जितनी है उसमें 1 2 इनकमिंग डिग्री इन डिग्री भी बोल रही है, तो इसकी इन डिग्री होगी 1, आउट डिग्री कितनी होगी, इससे एक भी भाग नहीं जा रही, तो इसकी आउट डिग्री 0 होगी। इसकी इन डिग्री की बात करूं, इसमें कोई एज आ रही है नहीं, तो इसकी इन डिग्री 0, आउट डिग्री 2।
अब जो हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम वो कैसे पहचानता है कि भैया ये अकाउंट क्या है, स्पैम वाला है, ठीक है। अगर उसने देखा कि भैया कोई नोड है, उसकी जो इन डिग्री, तो उसे पता चला ये कोई स्पैम, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से मिला नहीं मिला। इन डिग्री मतलब क्या है, भैया कितने लोग मुझे मेरे फॉलोअर, और ये होगी मेरी फॉलोइंग, कितने लोगों में, तो आपको इसका आंसर पता चला होगा कि कैसे चीजें आप यूज होगी। ट्री और ग्राफ में डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वो चीजें एप्लीकेबल नहीं है, इसके कुछ फिक्स रूल है। आप ये कह सकते हैं कि हर एक ट्री ग्राफ है, लेकिन हर एक ग्राफ ट्री नहीं हो सकता, कि हर एक ट्री ग्राफ हो सकता है, लेकिन ये वाला एडेंसी मैट्रिक्स और एडेंसी लिस्ट का, कि भैया इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं ये मैप के द्वारा। देखो इसको हम कर सकते हैं अनऑर्डर्ड मैप की हेल्प से। ये आपके लिए होमवर्क, इसको मैं किसी फ्यूचर के लेक्चर में कवर करूंगा, इसको आज कवर नहीं करेंगे। मैंने कहा ये सारे काम हम आ गए हैं अपनी ग्राफ सीरीज के थर्ड लेक्चर में, और आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं ट्रैवर्सल के बारे में, बीएफएस ट्रैवर्सल और डीएफएस ट्रैवर्सल। मैंने is great, yeah, no, for right. So this is just a subset of methods depend. So let's see what see size is empty, replace element, swap. These are all container operations. These are when I'm giving you the position. So size, for instance, is constant time. I can keep track of the number of edges and vertices in the tool list. Is empty is again constant time. If the size is 0, then it's empty. Look, this is inside press take. It should take constant or order n. It should take constant time because these are unsorted lists. Yeah. Similarly, insert edge, insert directed edge, all of these can be done in constant time. Let's look at remove vertex. This last operation you were not able to see it very clearly perhaps because it's getting overlapped here, but it's if I remove a vertex, I also remove the edges which are incident to that vertex clearly, right? Because otherwise where would their edges, where would the endpoints of the edges be referring to? So I have to essentially get to that vertex, and I also have to traverse through the list of edges. Yeah. So the list of edges is number of edges is order m. So I have to traverse through that entire list to find out which are the vertices which are adjacent
which are the edges which are incident to this vertex, and also remove those edges, which is why this operation is going to take order m time. Here when I say remove vertex, I am assuming that you are given the particular vertex you want to remove, right? Let's say you are given the position in the list. Yeah. So in this manner you can look at the this slide more carefully and understand the times. Okay. So this is not the only way of representing a graph, right? There could be other ways. We are now going to look at what's called the adjacency list data structure. This is your graph. Here I am taking an example of an undirected graph, but all these data structures, all the three data structures that I am going to be talking of today can be used to represent both directed and undirected graphs. Yeah. So in this undirected graph, how do I represent it? I have an array of vertices, an array corresponding to vertices, let's say. So this location corresponds to vertex A, this corresponds to vertex B, this location corresponds to C, D and E. That's how it should be. Right. Now, what are the vertices which are adjacent to A? They are B, C and D. So I'll have a linked list starting from this location, which will have elements B, C and D in it. Right. This corresponded to location vertex B. So which are the vertices adjacent to B? A and E. So this link contains only A and E in it. Right. This was corresponding to D. Vertices adjacent to D are A, C, E. So that's why we have A, C, E in this. These lists are also unsorted lists. Yeah. So adjacency list of a vertex. So what we are keeping track of is the adjacency list of each vertex. Okay. How much space does this data structure require? I'll have an array of size n. Yeah. And what will be the length of the linked list at each location? The degree of that vertex. So the total space required in this part is the sum of the degrees, which we argued is 2 times n. So the total space required is n plus m. So it should be order n plus m, theta of n plus m. So why are we implementing this as a linked list? जो उसके adjacent edges हैं. Why are we implementing them as a linked list? Couldn't we just simply keep them as an array? We could keep them in an array. That's the next data structure. We'll see what are the pros and cons for that. Array implementation of linked list. What? You can use the array implementation of linked list. No, what he's saying is, okay, we'll come to what he's saying in the next slide, right? When I show you the adjacency matrix implementation. So what's the advantage of this? How is this better than the previous data structure? Moving a vertex. Adjacent vertices. So to find out what are the adjacent vertices of a given vertex, that can be done much more quickly here. How much time does it take now? Ordered degree. Ordered degree. If I want to list out all the adjacent vertices. If I give you two vertices and I ask you, are these two vertices adjacent? How much time would you take? Ordered degree still. Degree of one of the vertices, let's say. The smaller one. Yeah? Yeah, this is an array. This one is an array. This is an array of just references of pointers, nothing else. There is nothing else stored in this array. You can store more information if you want. Any information associated with the vertex you can store at this location in the array. It's just an array, right? You can. Right. It's an array typically indexed by, suppose, so you typically number your vertices 1 through 1, 2, 3, 4 and so on, right? So and then that would correspond to this location. Okay. We can combine this with the edge list data structure, right? And we'll get something more complicated like this. What is this? Ye upar wala part is just your edge list data structure that I showed you. And now with each of these vertices, I have the adjacency list associated with each of these vertices. Right? I have both the in adjacency list. What is this? Ye upar wala part is just your edge list data structure that I showed you. And now with each of these vertices, I have the adjacency list associated with each of these vertices. Right? I have both the in adjacency list and the out adjacency list. So from each of these elements, there are two pointers. One is pointing to a list of incoming edges and the other is pointing to a list of outgoing edges. Okay. So we have combined this in that. The adjacency list and the edge list data structure, somehow we have combined them. Okay, good. Let's see. In what regard is this better than this?
Right. So here, for instance, the operation, suppose I said operation given a particular edge, uh,
आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि आप list and the edge list data structure, somehow we have combined them. What that in it? Let's look at what here. Double arrow. What do you mean by double arrow? Doubly like the above portion of this line, an arrow points from an edge to this Vertices, and from here it's pointing from the vertex to the edges. Yeah, exactly. Okay, so let's look at what are the time requirements for this particular data structure. Let's see. Suppose I want to find out the incident edges incident to a certain vertex, so I can get to that vertex. So given a particular vertex, I can find both the in edges and the out edges in time proportional to the degree, the in degree and the out degree respectively, right? So that's the incident edges. Given two vertices, are those two vertices adjacent? How much time do I need for this? So given one vertex, I just need to run through the. So it's given a particular vertex DFW and let's say MIA. Are these two adjacent? Is there a flight from DFW to MIA? What will I do? I'll go in the out list of this and see. No, I'll have to do more, right? I'll come to this. I'll come to the out list and then I have to go from here to this list here. Right? This is just numbers, right? That or whatever. This would be a reference to this information. These are, so it depends upon how you organize it. Okay, this could be organized as out lists of edges, or it could be organized as out adjacent vertices. If it were organized as out adjacent vertices, it would have been easy. But if like here I'm organizing it as edge list, so you'll have to now go to the corresponding edge and see what the other endpoint of that edge is. All of that is constant time. Okay, so these are, so there are many ways of organizing a graph. I'm just giving you a very high level idea, and then for your particular application, depending upon what operation you are doing more often, you will have to choose the appropriate organization. Worst case would be maximum, but suppose I also kept degree information associated with each vertex. That's not very hard to do, right? Just one integer variable which will keep track of it, then I can make this. So it depends upon where you want to optimize. If you're doing this kind of operation very often, then it makes sense to keep degree, right, and try and reduce running time. Yeah, if you're not doing this operation, then there's no reason why you should keep track of the degrees of the vertices. Okay, so third representation is what's called the adjacency matrix representation, and this is a very simple representation. Here you just have an n cross n matrix, yeah, and there would be basically just binary entries, bits 1 0. There is a 1 which is a true if there is an edge between those two vertices. Yeah, so there is an edge, there is a 1 here because there is an edge between A and B.
What can you say about this matrix? What property does it have? It's symmetric. If it's an undirected graph, it would be symmetric. If it's a directed graph, it need not be symmetric. Right? If in a directed graph, you can have it that this would be 1 if there is an edge from B to A, or you can have it the other way around, depending upon what you can keep any way you like. The graph, the space requirement, right? It's order n time. Yeah, order n. Order n. Yeah, so that will be order n time. Okay, so I could have, for instance, so again, there is a possibility of, so instead of having ones and zeros, you could keep track of the edge information here. Yeah, and so you could keep. Okay. So the adjacency matrix structures augments the edge list structure with the matrix. So you could also have the edge list together with the adjacency matrix, both of them together. Right. So in the edge list, recall that for corresponding to corresponding edge. Yeah. Have tell the information with about. Right. So in the edge list, recall that for each edge you would have information with about what are the two endpoints, right? So they could be referring to the corresponding locations here. Instead of pointers, they could just be integers. You could just have, for the ones, you could also have the corresponding edge. Yeah. Augmenting an array, right? So again, so this is an operation which is not done very often, right? Quite often the graphs that you work with are static graphs. That is, you don't add new vertices in the graph, or you don't add remove new vertices from the graph. So if you want to have a data structure which implements that, then perhaps this is not the right data structure. You could do that, yeah, of course, all of those things could be done. I'm not saying it cannot be done here at all, but then this would perhaps not be the best data structure to use if this was a frequent operation you were doing, adding vertices. Even that should be order n time, because just to make x and 1 minus 1 basically rows and columns elements add them. But then n square elements you should Okay. Okay, let's look at what are the times required for the various operations here.
So given two vertices, to determine if they are adjacent or not is just a constant time operation, right? But now given a particular vertex, to find out all the vertices which are adjacent to it, how much time does it take? Row or column, right? Which is order n. It's not order degree now, it's order n. There's a difference. Yeah? Why? Because now you'll have to take that particular row or column and look at all the entries and see which are ones and which are zeros. So that will give you order n. So incident edges, in incident edges, out incident edges, all of them will take order n. Right? Insert vertex, remove a vertex. I put down order n squared here because I'm assuming that you have to copy them into a new array. Right? It's not very easy to take a two-dimensional array and extend it by one row and one column. You understand why? Because the problem is that two-dimensional arrays are stored as one-dimensional arrays. You know, after all, in a particular row major or column major form, right? Now, if you want to extend it now, how does that happen, right? Because you have to then move all the information, right? So that's why extending a two-dimensional array is not an easy task. Yeah, you essentially have to copy all the information into a new array. Okay, so that's all I'll have to say about data structures for representing graphs. So there are three different things you've seen: adjacency list, adjacency matrix, and the simple edge list. And you can, depending upon what operations are critical, which are the ones that you're doing more often, combine them in a suitable manner. Right? If space is not such an issue, then you can keep the adjacency matrix data structure because it's quite simple, but it requires a lot of space. It requires n squared space. Yeah. The standard implementation which is preferred very often is the adjacency list. So if you can't think of anything, then just use the adjacency list data structure to implement a graph. Okay, so now I'm going to go on to graph searching algorithms. So this is something that you have done in a certain sense, which is why I'm going to be taking it up right in this class. So what is a graph search algorithm? It's basically a mechanism of visiting all the vertices of the graph in some